This conference will now be recorded. या अली मदद सर, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, अली मदद सर, या अली मदद, या अली मदद। तमाम दोस्तों को या अली मदद। या अली मदद। आज हम एक बार फिर कलाम इमाम मुबीन फरमान नंबर 23 नंबर के फरमान से इस क्लास का आगाज करेंगे। मुला के हुजूर में कुछ आजिजाना दरखास्त के साथ मुला के मुबारक नाम से नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, या मौला तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला, तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला, या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, या मौला तेरा मुबारक नाम इतना प्यारा है कि जब भी लेते हैं हमारे दिलों में, हमारे अकुल में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। मौला नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम, हाजिर इमाम, हाजिर इमाम, हाजिर इमाम, या मौला मदद। फरमान नंबर 23 कलाम इमाम मुबीन। हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद फरमाते हैं कि अब वो जमात को ईरान जाने का अपना इरादा जाहिर फरमाते हैं। जमात ने समझा कि दनी सलामत करबला तशरीफ ले जाते हैं, दनी सलामत यहीं क़याम फरमाए। इसलिए कि जमात ने अर्ज की कि आप वहां ना जाएं और यहीं रहे। तब मौला ने फरमाया, तुम खुदा के बेद में हाथ नहीं डालो, हमें बहुत से काम करने हैं, हमें हमेशा हिंदुस्तान में नहीं रहना है, हम तो दरवेश है, हम सब जगहों पर जाएंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे इमाम कोई ज़ाहिरी काम के अमूर के लिए कुछ लीडरों से या जमात से बातचीत कर रहे हैं। It sounds like Imam is having discussion with the leaders regarding the worldly journey and work. But in this very paragraph, you will find two keys. इसी जगह पर आपको दो अजीब और गरीब चाबियां मिलेंगी। चाबियां इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल कहते हैं, कलीदे उर्दू में, आसान लैंग्वेज में चाबियां, मगर ये कलीदे प्रिंसिपल्स। जहां पर मौला फरमाते हैं कि तुम खुदा के काम में हाथ ना डालो, खुदा का जो बैत है,
do not interfere with Allah's secret. And the second part is, Mullah says, I am Darwish, sage. In a very sentence where Imam is talking about that this work, the work he is doing is the work of Allah. And in this very sentence, he said, I am Darwish. How and what do we learn from this? इसके अंदर से हमें क्या सीखने मिला कि एक ही लाइन के अंदर मुल्ला फरमाते हैं कि आप खुदा के कामों के अंदर हाथ ना डालो, क्योंकि इमाम जो भी काम करते हैं वो खुदा का काम है। लेकिन उसी लाइन के अंदर मुल्ला अपने आप को एक दरवेश कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इमाम की पोजीशन, नूरानी पोजीशन क्या है और दुनिया बाने वो किस तरह से रहते हैं। What do we learn from this? What is the position of the Imam and how do they live in this world? In very one line, in one place, he is saying, I am the secret and I'm doing the secret work of Allah. In another hand, he's saying, I'm sage. In very one line. That shows us, that teaches us that Noor is Ali Allah. But Imam as a body lives his life very humbly. वो नूर से अली अल्लाह है और जिस्म के साथ, आजिजी के साथ, दरवेशी के साथ, फकीरी के साथ, गरीबी के साथ वो आपके सामने एकदम हम्बल होकर रहते हैं। ये इमामों का सेवा है और यही काम हमारे पीरों ने किया। जबकि हमारे पीर फनाफी इमाम होते थे मगर अपने आप को फकीर की तरह लोगों के सामने पेश करते थे। ये इमामों का सेवा है और ये इमामों का लेसन है हमारे लिए। These are the way imams and peer lives with the Noor, but present themselves as sages. Humble, humble, humble is the way of the imams and peers. So what our path should be? What our path should be? Ajizi, humility, humbleness. Because that's what Imam does and that's what Imam likes. मौला आगे फरमाते हैं, हमारा मुल्क ईरान के रास्ते है, बल्कि हम ईरान जाएंगे, आइंदा साल हम जंगवार जाएंगे, कभी हम विलायत भी जाएंगे, वहाँ हमारे हजारों मुरीद है, हमें तमाम जमातों के काम करने हैं। If you remember this present Imam's very first Farman, where Mullah said that as my grandfather have worked for the Jamaat, I will continue on that line of work in the way my grandfather have. Meaning all
of the Imams, the purpose of their coming to this world amongst us is for the salvation of the Mu'mineen, of the Jamaat. They come over here for us. In one of the Farman, Maulana Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah alayhi, may our soul be sacrificed to the Imam, says that we have taken hardship and burden to come in this world for your salvation. मौला फरमाते हैं हम इस दुनिया में बहुत तकलीफ लेकर तुम्हारी निजात के लिए आए हैं. Further मौला says हम तुम जमात के काम के लिए जाते हैं, वहां हमें 1 महीना और 20 दिन लगेंगे. हमें वहां हम जो काम करेंगे उसकी खबर 1 महीने के बाद होगी, तब तुम खुश होगे. हमारा घर यानी कि दरखाना हिंदुस्तान में है. यहाँ पर हम थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें. In this line where Mola says that my darkhana is in India. Some of you may know the history of that, but just for our learning, let's go into 2 minutes and take a history lesson. After the demise of Hazrat Imam Khalilullah in Iran, और अभी मैं उर्दू में भी इसको बयान करूंगा ताकि हमारे सब दोस्त इस हिस्ट्री के पार्ट को समझ सके. इमाम हसन अली शाह माबाब and Ali Shah Mabab, they migrated to India and they established very first darkhana, the seat of the Imam, the seat of the Imam. As we have a seat of the Imam in Egremont and now in Lisbon. The very first seat of the Imam was established in India with this Farman. And pay attention to this line of Farman. Mullah says, after 1300 years of prosecution, we are establishing Darkhana in India as the prosecution is lifted from our head. And now we can rule peacefully. Mullah Imam Khalilullah Salawatullah alayhi की रहलत के बाद माँ बाप हसन अली शाह और अली शाह इंडिया तशरीफ ले आए और वहां पर उन्होंने अपना पहला बैठक दरखाना कायम किया इस फरमान के साथ कि इस दरखाना के इस्टेब्लिश करते हुए हमें महसूस होता है कि 1300 साल की जो मुशक्कत थी, प्रोसिक्यूशन थी, जो लड़ाई थी, वो हमारे सर से उठ गई है और अब हम आराम से इमामत का काम करेंगे. Meaning, the time has changed and there will be no longer war or any kind of prosecution against Imam.
there was a prediction made by Imam Hassan Ali Shah Salawatullah alayhi. And you can see what Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah alayhi, may our soul be sacrificed to that Imam, in his longest imamat ever, 72 years, did, and how he was treated like royals. No more prosecution. No more prosecution. And if you look at the Hazrat Imam, he have taken this imamat in very short time, less than 140 years, to a new level. Between Sultan Muhammad Shah and Hazrat Imam, you can see they have taken this imamat to a new level in this world. And they openly, before Hazrat Khalila alayhi wasalam's time, Imam did imamat, but in very limited area, and mostly work was done by peers and dais. Most of the work was done by them, not by the Imam himself. But since Hassan Ali Shah's time, and since establishment of this Darkhana, this is a beautiful history for us to learn. What happened? Why, after 1300 years, all of a sudden, the weather changed, environment changed? What happened? What was the cause of that? What happened to all the enemies or open enemies that we had? Where did they disappear? If you go into that history, you will learn, and then you will understand when our 48th Imam, as soon as he sat on the Gadi, on the throne, at the age of less than 8 years, he said, this is the last day. ये दौरे आखिर है, ये दौरे क़यामत है. अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से सारे दुश्मन दूर हो गए, भाग गए, गुम हो गए, चले गए, और एकदम से माहौल जो था वो बदल गया. क्या बात हुई? ऐसी क्या बात हुई कि जो 1300 साल तक दुश्मनों ने जो इमामों को तंग किया, you know, even Imam Khalil alayhi salam, our 45th Imam, was martyred in a trumpet in Iran. यानी कि इमाम खलील अलैहि सलाम भी शहीद हो गए. यहाँ तक यानी कि 45 इमाम तक एक अजीब प्रोसिक्यूशन था इमाम के खिलाफ. एक जंग थी, खुली जंग थी अहले बैत के खिलाफ, इमामों के खिलाफ. लेकिन ऑल ऑफ द सडन, एकदम से, अचानक से ये बात बंद हो गई, खत्म हो गई, दूर हो गई. क्यों और क्या बात हुई कि इमाम ने 48 जामे में बैठते ही 8 साल की उम्र से कम अरसे में उन्होंने फरमाया कि ये दौरे आखिर है. ऐसी क्या बात हुई? ये बात हमें हमारी हिस्ट्री से पता चलती है. अगर आप इस एरा के ऊपर तवज्जो देंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ऐसा हुआ कि इमामों को इस बर्डन से छुटकारा मिला और जमात जो गरीबी में थी वो एकदम से ऊपर आ गई, ओपन हो गई, खुल गई. What was the reason? That all of a sudden the Jamaat, which was very, very poor,
all of the sudden flourished, opened up. And now Imam openly on the world platform declares, even in the countries where the prosecution was on the Imam, ना सिर्फ पूरी दुनिया के स्टेज के ऊपर इमाम अपने आप को इमाम डिक्लेयर करते हैं, मगर उन ममालिक के अंदर भी कि जहां पर एक जमाने में अहले बैत, आले नबी, औलाद अली इमामों पर एक जुल्म होता था, वहां पर भी इमाम जाकर अपने आप को खुल्लम खुल्ला आले नबी, औलाद अली, the 49th imam of the इस्माइली तरीका इन इस्लाम पेश करते हैं। सब कंट्री में, सीरिया में, इजिप्ट में, ईरान में, दुबई में, यानी कि जहां जहां पर भी इस्माइली बसते हैं, वो ममालिक में जहां पर इमामों पर जुल्म हुआ था, इमाम वहां पर जाकर अपने आप को ओपनली डिक्लेयर करते हैं। सो अटेंशन शुड बी व्हाट हैपन इन दिस टाइम। अगर ये हम इसका समझेंगे, हमें बहुत फायदा होगा, हमें अपने तरीके और अपने इमाम को समझने में मदद मिलेंगी यहाँ से। लेट्स कम बैक टू आवर फरमान। मौला फरमाते हैं कि हम दरवेश हैं, हम दरवेश हैं। दिस वर्ड, this statement of the Imam, I don't know if some of you may remember, if you are over the age of, let's say, 50, 60, you may have heard from your parents or your grandparents. अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो शायद आपने सुना होगा आपके माँ बाप से, अपने दादा दादी से, कि एक जमाने में इमाम जमात में से जो बड़ा होता था उसको दरवेश का टाइटल देते थे। और ये टाइटल इमाम का खुद का टाइटल है। इमाम बोलते हैं कि मैं दरवेश हूं, और ये टाइटल इमाम हमारे जमात में से जो भी बड़े होते थे उनको देते थे एक जमाने में। यानी कि और 48 इमाम की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 48 इमाम प्रीवियस जामा, वो दरवेश का टाइटल देते थे। लेकिन जमात कहने लगी कि अब हम पैसे वाले हो गए हैं, अब हम सूट एंड टाई में आ गए हैं, अब हमें ये दरवेश का टाइटल अच्छा नहीं लगता है, करंट नहीं लगता है। मौला ने फरमाया कि ये आपकी नादानी है, ये हमारा टाइटल है। इमाम का टाइटल होता है दरवेश, जो इमाम मेहरबानी करके अपने आला मर्तबे के मोमिनों को देते थे। लेकिन मोमिनों ने अस खुद अपना दरवाजा बंद कर दिया इस रहमत और टाइटल से। Imam would give his own title of Darwesh to the higher ranking Mu'mineen in the Jamaat, but Jamaat came and said, Ya Mullah, we do not want this title anymore, because now we have some money, we have become rich, now we are wearing suit and tie, and this Darwesh title is no longer current. And Imam replied, it is your ignorancy. The title of Darwesh is the title of the Imam. It was blessing for you, but you have closed the door of this blessing on yourself. कभी कभार
हम नादान है ना, अभी हम बात करेंगे, इसी फरमान में हम बात करेंगे कि हम बच्चों की तरह है। हम नहीं समझते हैं इमाम की विजडम को, इमाम की बातों को, इमाम की हिकमतों को। We do not understand, and that's why we make mistakes like this. So Mullah says in this Farman, in the next line, Mullah says, वालिदीन बच्चों पर गुस्सा नहीं होते, तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर हमारा जरा भी गुस्सा नहीं है, हमें पीर सदरुद्दीन वाला काम करना है। तुम जिस वक्त दुआ पढ़ते हो उस वक्त माफी काम करना है। इंसान पर वाजिब है कि इंसान के मगज में जो चीज रखी है उस पर गौर करें। I wanted to repeat this in English because it's a very important line. After we talked about the title of Darwish, let's say what Maula Baba is saying now. Imam is saying that parent, and of course Imam is our spiritual father and mother. So parents does not get angry with children. It does not. And neither do I, Mullah says. I'm not mad, angry, upset with the Jamaat. You know what I'm talking about, right? He's talking about the title of the Darwish. That I'm not angry with you. I'm not. हमें पीर सदरुद्दीन जैसा काम करना है. I want to work like Pir Sadruddin. Why would Imam said I want to work like Pir Sadruddin? Because Pir Sadruddin, like a loving mother, took the hands of the Jamaat and took them to the salvation. So Imam says, I am your loving mother. I will hold your hand and I will take you to salvation regardless of your understanding. मौला ने क्या फरमाया इस लाइन के अंदर कि हमें पीर सदरुद्दीन जैसा काम करना है. इमाम तो इमाम है, वो क्यों फरमाएंगे कि मैं पीर सदरुद्दीन जैसा काम करूंगा. वो ये समझा रहे थे कि जिस तरह से पीर सदरुद्दीन ने एक प्यारी माँ की तरह जमात का हाथ पकड़कर उनको तारा, इसी तरह से मैं तुम पर नाराज नहीं, तुमको प्यार से एक माँ की तरह, पीर सदरुद्दीन की तरह तुम्हें तार लूंगा. अब the next word or the statement requires attention again. इंसान पर वाजिब है. Remember Mullah is talking to Jamaat, to you and me. इंसान पर वाजिब है कि इंसान के मगज में जो चीज रखी है उस पर गौर करें. It is upon you to pay attention to the intellect. To the intellect. Remember what was the statement Mullah said? It is your ignorancy that you are not taking the title of the Imam Darwish. ये आपकी नादानी है कि इमाम अपना खुद का टाइटल तुमको देता है लेकिन तुम उसको नहीं लेना चाहते. तो मौला क्या फरमाते हैं, आप पर फर्ज है कि आप अपने मगज में जो इंटेलेक्ट रखी हुई है, जो अक्ल रखी हुई है, उसके ऊपर गौर करें आप. क्योंकि अक्लमंद होता तो कभी भी इमाम की रहमत को जाने नहीं देता. लेकिन यहाँ पर एक और बात है. I wanted to tell you a secret here. Imam says, think about what you have in your head, in your forehead. You know what else we have instead? And with the intellect, what do we have here?
we have Imam's Noor in our forehead. इमाम फरमाते हैं आपकी अक्ल में जो चीज रखी गई है उस पर गौर करें। हमारे दिमाग में अक्ल के साथ साथ अलावा नूर भी है, और नूर जो है वो रोशनी, और नूर जो है वो हिदायत है। The Noor is the light and the guidance within you, in your forehead, in your intellect, in your head. Pay attention to the light and the guidance. अगर हम तवज्जो देते हैं अपनी अक्ल पर और अपने नूर की रोशनी पर, नूर की हिदायत पर, तो हम कभी भी ऐसी नादानी ना करते। Imam is drawing very subtle way our attention to our intellect and toward the noor within our forehead. सुभान अल्लाह। तुम जिस वक्त दुआ पढ़ते हो उस वक्त हम दीदार देते हैं, और जाहिर में भी तुम्हें दीदार देते हैं। तुम्हें दीदार चाहिए तो जमात खाने जाओ। Very powerful statement. Mullah says, whenever you pray, जब भी आप जमात खाने आकर दुआ पढ़ते हो, वहीं पर हम आपको दीदार देते हैं। जाहिर में भी दीदार देते हैं और जमात खाने में बातीन में भी दीदार देते हैं। आज एक बार फिर नाचीज आपको याद दिलाना चाहता है कि क्या जब हम जमात खाने जाते हैं तो कभी हमारे दिल में, हमारे ख्यालों में ये बात होती है कि मौला बापा यहाँ पर हाजिर और मौजूद है। क्वेश्चन, फूड फॉर द थॉट, ask yourself when we go to Jamaat Khana, how many time we feel or think or pay attention to that Imam is present in the Jamaat Khana. Why am I asking you this question? ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं मैं? क्यों कि अगर आप अपने करीब करीब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोग कितना शोर करते हैं, कितनी बातें करते हैं, कितना हंगामा करते हैं। अगर उनको यकीन होता या कम से कम उन्होंने सोचा होता कि इमाम जमात खाने में हर हमेशा हाजिर और मौजूद है, तो कैसी डिसिप्लिन के साथ बैठते हैं। If they had paid attention to that, if they had thought about it, have you seen the Jamaat around you? The commotion, the loud sound, the talk, the laughter. If they had thought about it, if they believed, they would never, ever would do that. They would sit in a disciplined manner as they were sitting in the darbar in the presence of the Imam. I would request you to listen to a lecture named Firm Belief. मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि आप एक मर्तबा दोबारा एक लेक्चर सुने, मुकम्मल यकीन, फर्म बिलीव। आप अगर उस लेक्चर को सुनकर समझ जाएंगे तो आइंदा कभी भी जमात खाने में शोर नहीं करेंगे। If you listen to the lecture, it's only 20 minutes lecture. Firm belief. If you listen to it very carefully, and if you understand, I'm telling you, you will never lose your discipline in Jamaat Khana ever again. Because Imam is always present in Jamaat Khana. He is ready to give you didar
due to our own losing the discipline, not believing that Imam is present in Jamaat Khana, we do not receive. Otherwise, every day, Imam is giving the didar to the Jamaat in the Jamaat Khana. अगर हम अपनी डिसिप्लिन रखें, ईमान रखें, यकीन रखें, तो मौला रोजाना ही जमात खाने में आपको दीदार देने के लिए बैठा हुआ है, रोजाना ही बैठा हुआ है। अगर आपको यकीन है तो मौला आपको इशारा कर रहा है, आओ जमात खाने, यकीन रखो, मुकम्मल यकीन रखो। Come to Jamaat Khana and believe and think, and if you believe, he is ready to give you didar in Jamaat Khana every single day. He is always present and willing to give you the didar if you believe and if you are ready. Feel, if you feel that and if you have a firm belief, those miracles happen every day. अगर आपको यकीन है तो दीदार के माजी से जमात खाना में रोजाना ही होते हैं, रोजाना ही होते हैं। मुला के फरमाते हैं, और जाहिर में भी हम तुम्हें दीदार देते हैं, तुम्हें दीदार चाहिए तो जमात खाने जाओ, हमारी बादशाही का सोचो। हम सब बादशाहों के ऊपर है और पूरी दुनिया की बादशाही करते हैं, फिर भी हम दरवेश हैं। You see, this is the third time Imam is mentioning that even though I am the king of the king, even then I am a darwish. आप समझ गए ना मौला क्या फरमा रहे हैं कि आपने कहा हमें दरवेश का टाइटल नहीं चाहिए क्योंकि हम पैसे वाले हो गए हैं, आज हम सूट और टाई में घूमते फिरते हैं, ये टाइटल अब करंट नहीं है, ये पुराना हो गया है, दकियानौजी हो गया है। We don't want title of darwish. Third time Imam is repeating, even though I am the king of the king, but I am still a darwish. Imagine what Jamaat lost by saying, Ya Mullah, we are no longer poor, we are no longer khoja utave boja, we are no longer labor, but we are with some money, influence, suit and tie. And Mullah is saying, even though I am the king of the king, but I'm still darwish. You see where Mullah is and what he is teaching us and where we are and not understanding. हमारी ह्यूमिलिटी में कितना फर्क है, हमारी आजीजी कहाँ गई। फिर भी हम दरवेश हैं। इसके बाद मौला ने जमात को 10 बोसी कराई और फरमाया, हम करबला नहीं जाएंगे। तुम ऐसा समझते हो कि मौला करबला जाते हैं, हमें किसी की जियारत करनी है। इमाम हुसैन सिर्फ वहां नहीं, इमाम हुसैन हर जगह भरपूर है, यहाँ भी हाजिर है। हम तो सिर्फ दरिया की हवाखोरी के लिए बसरा तक जाएंगे, मुमकिन है हम अबू शेर तक जाएं। Imam is lovingly assuring the Jamaat that don't worry about it. I'm just going on a kind of vacation, because Imam, he loved going to the ocean front or in the sea
at that time when they were traveling through the ships. He would love that because of the relaxation or the wind. So he's saying, don't worry about it. I'm just taking a stroll. I'm going to just take a small break, a vacation. But during their vacation, I will do the work for the Jamaat for you. And you will find out when I come back. I will tell you what work was done when I went there. You know, Imam does not go anywhere without a purpose. There is always a purpose in his travel. इमाम कहीं भी ऐसा ही नहीं चले जाते हैं, हर कदम पर हिकमत होती है। मौला आगे फरमाते हैं, हम तो इमाम हुसैन अब हमारे पास बैठे हैं और तुम्हारे पास भी हाजिर है, इसलिए हम करबला जाने में खुश नहीं, हम बसरा हवाखोरी के लिए जाते हैं। फिर अब हम अभी जमात के काम करने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह मिस्त्री जब घर बनाता है तो सब चीजें तैयार करता है, इसी तरह हम भी जमात के सारे काम पूरे करेंगे। इसके बाद मौला ने फरमाया, इंसान पर लाजिम है कि इमाम को अपने सीने में जगह दे, तुम अपने आप को कुछ ना समझो, बड़ाई छोड़ दो, बड़ाई छोड़ दो, इमाम तुम्हारे सीने में रहे लेकिन ये काम तुम नहीं करते। Okay, this is the last two lines we will read today. Let me explain this and then we will end and open the mics for questioning. मौला फरमाते हैं, once again, be humble. You know the event happened, right? You remember okay, what happened, why Imam is giving us this format. Imam says, be humble, do not be proud. आजिज़ी करें, गुरूर ना करें, बड़ाई ना करें, आजिज़ी इख्तियार करें और अपने दिल में इमाम को बसाएं। Keep Imam in your heart. Do not be proud. Keep Imam in your heart. So let me stop here and inshallah we will continue this Farman in our next session next Saturday. Ji. Subhanallah, sir, Subhanallah. Friends, if you have any questions, please share in the chat room or you can ask later. Sir, we have received one question so far. So friends asking, why not to interfere in Imam's secret? We love our Imam and want to help Imam. Therefore, we want to help Imam and be one with him. Okay. सवाल अच्छा है। तो सबसे पहले आप देखें कि इस सवाल के अंदर दो चीजें थी कि इमाम फरमाते हैं कि हमारे कामों के अंदर आप इंटरफेयर ना करें, और दूसरी तरफ से इमाम हमें कहते हैं कि आप वॉलंटियर है, आप हमारे दाई हैं, आप हमारे एम्बेसडर है, आप हमारा हाथ बटाएं। So in this question there are two questions and two different views. In one place Imam says, do not interfere with my work, and in the other hand Imam says, help me be my ambassador, be my da'i, be my representative. So there are two different views and understanding. Never question Imam's wisdom and work, and do what Imam tells you to do. Help him
be his ambassador, his representative is दाई। तो यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं। इमाम के एकामात के ऊपर सवाल ना करना, लेकिन जो इमाम आपको कहे, फरमाए, हुक्म करे, उसके ऊपर चलना और वो काम करना जो इमाम आपको कहते हैं। इमाम के राज आपको जानने हैं तो आपको इबादत करनी होगी। इमाम का हाथ बटाना है तो आपको उसके फरमान पर चलना होगा। If you want to know the secret of the Imam, you would have to do ibadat. If you wanted to help Imam in his work, you would have to follow his farman. But do not challenge, do not interfere in his wisdom. यहाँ पर ये बात हो रही है जी। So friends asking, what are miracles? Please explain. And also same friends asking, please explain the darwish, meaning of darwish. Sage, दरवेश, फकीर, दरवेश, सेज इंग्लिश में जिसको कहते हैं। अपनी इंडिया की जबान में उसको साधु कहते हैं। साधु जिसका घर बार ना हो और उसके पास कोई भी वर्ल्डली पोजीशन ना हो, उसको दरवेश कहते हैं। हमारी उर्दू जबान में इसको गरीब कहते हैं, फकीर कहते हैं। दरवेश का लिटरली मतलब ये होता है, लेकिन इमाम अपने आप को दरवेश कहता है। इमाम के बहुत सारे अजीबोगरीब टाइटल है, यतीम, मिस्कीन, दरवेश, फकीर, गरीब, इब्ने गरीब, ये तमाम टाइटल इमाम के हैं। आपने देखा क्यों इमाम अपने आप को गरीब इब्ने गरीब कहता है, अपने आप को मिस्कीन और यतीम कहता है? क्यों? उसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। एंड इफ दिस पर्सन इज आस्किंग, अगर वो इंग्लिश जानता है, आई विल एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश इन अ मिनट। लेकिन इमाम जो है उसका अपने लिए ये अल्फाज यूज करने के दो मतलब है। एक आजीजी, दूसरा उसके अंदर बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है कि इमाम दरवेश है, उसको दुनिया की चीजों की परवाह नहीं है, उसको दुनिया की चीजों की परवाह नहीं है। जिस तरह से एक दरवेश होता है, एक फकीर होता है, एक साधु होता है, उसको दुनिया के पास, उसके पास दुनिया की कोई पोजीशन नहीं होती है, वो दरवेश होता है। तो यहाँ पर एक तरफ से ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है, और एक तरफ से इमाम हमें समझा रहे हैं कि दुनिया की हमें कोई परवाह नहीं है। So the word darwish stands for sage, those who have no worldly position nor have a need for worldly position. Mullah Ali was the biggest, higher, ultimate darwish. Even though he was from the tribe of Abu Hashim, from the family of the Imams, but he lived his entire life as a fakir, as a garib, as a darwish. He did not have any worldly position. He was a true sense a darwish. That is the title of the Imam. So इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। Your second question was about the miracle. कि माजिज़ात क्या है? पहले वर्ड माजीजा, माजीजा, उसको समझ लें। Because in English the miracle does not do justice.
because miracle is normally taken for magic, so it does not do justice in English language. लेकिन जो वर्ड माजिजा, माजिजा का मतलब क्या है कि वो काम जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन उसको अंजाम भी नहीं दे सकते हैं और उसको समझ भी नहीं सकते हैं. The word majiza, the miracle, means that something that you see but cannot understand nor perform, उसको माजिजा कहते हैं. कि वो चीज जो आप देख तो सकते हैं लेकिन उसको समझ नहीं सकते हैं कि ये क्या हुआ और उसको अंजाम भी नहीं दे सकते हैं. That is the meaning of majiza. That's why I say the word miracle does not do justice, because miracle normally is taken for magic, which is not fair to the word majiza. Ji. I have a question, Aziz Ba. Ji. You know, Mola Bapa is telling us a lot ke darweshi bano, like the Ginan says, Ham kuch nahi tame cho sarve. Today I understood when I was singing it. But again, before even you told me this thought has come to me ke Mola Bapa is din dunya jo bacha. And yet he's saying that I'm darweshi. And yet when I remember this Farman, he says, સાત જમીન અને સાત આસમાનમાં નથી સમાતો પણ મોમીનના દિલમાં ખુશીથી સમાવું છું. So I was thinking કે ઈ બાદશાહ આટલો બાદશાહ છે, ઈ કોઈમાં ન સમાય પણ આ મારો નાપાક દિલમાં એને સમાવું છે. So what do I do here? And what is Mola Bapa here saying? Humility. Is he giving us this direction? કે તમે humility કરો તો હું તમારા દિલમાં આવી જાઉં ને તમને ઓળખાણ આપું. Is he what he's telling us? બહુ જ સારો તમારો સ્ટેટમેન્ટ છે અને ક્વેશ્ચન છે. So let me translate this in English for our other friends, and then I will reply to your question or statement. So my friend is saying that it is amazing that Imam is the king of the king, but look at his humility. He says, I am Darwesh. I am Darwesh. But what do we do to become Darwesh like him? Is he saying that if you become Darwesh, I will come into your heart and I will give you Didar? And then she asks the question. There was a statement. Then she asks the question. How do we do that? That is a great question. શું કામ કે અગર આપણને ખબર જ નથી કે આપણે કેવી રીતે દરવેશ બને તો બાકીની વાતો તો બેકાર થઈ ગઈ. દરવેશ કેવી રીતે બનીએ? તો દરવેશનો શું મતલબ હતો? ઈ માણસ કે જેના દુનિયાની કાંઈ ફિકર ના હોય, જી ઈ કે મને દુનિયાની જરૂરત નથી. ને એક તમને ઇમામ હસન અલી શાહ સલવાતુલ્લાહ અલૈહી નો એક ફરમાન અને દાખલો સંભળાવું કે એક દફા ઇમામ પોતાની વાડીમાં બેઠા હતા ને ઉપર આસમાન માથે તન પંખી ઉડીને જાતી હતી. I will explain this in English for my other friends. ઉપર તન પાંખી ઉડીને જાતી હતી. મોલા કહે છે કે આને જોવો, આ તન પરિંદાજી છે ને એમાં જે પેલો છે ને એ મોમિન છે, જે બીજો છે ને એ દુનિયા છે ને જે ત્રીજો છે ને એ દુનિયાદાર છે. મોમિન દુનિયાથી ભાગે છે તો દુનિયા એના પાછળ ભાગે છે ને જે દુનિયાદાર છે ને એ દુનિયાના પાછળ ભાગે છે. તમે મોમિન બનજો, તમે મોમિન બનજો તો દુનિયા તમારા પાછળ હાલશે. અગર તમે દુનિયાદાર બન્યા ને તો તમને દુનિયાના પાછળ ભાગવું પડશે. મોલા સમજાવે છે આપણને. હવે તમારો સવાલ હતો કે આપણે શું કરીએ
કે આપણે દરવેશ બની જાય. એક જ કામ પોતાના દિલમાંથી દુનિયાને કાઢી મૂકો. એમ નથી કેતો કે તમે બધું પૈસો પાણી ઘર વેચીને બધા જંગલમાં જઈને બેસી જાઓ. હું એમ નથી કેતો. ખાલી દુનિયાની લાલચ, દુનિયાના ગરુર, દુનિયાની માયા, આ દુનિયા જે કરીએ છીએ ને આપણે, એને દિલથી નીકાળી નાખો. જ્યારે તમે દિલથી નીકાળી નાખશો ને તો તમારું દિલ પાક ને સાફ થઈ જશે ને ઇમામને તમારા દિલમાં બેસવાનો મોકો મળશે. Let me explain this Amen. for our Amen. English friends. I mean, what I was Amen. telling my friend here, that how do we become darwish? You only have to do one thing. Remove the greed, remove the pride, remove the thoughts of the world from your heart, so your heart may become pure and ready for Imam to come into your heart and give you his Nurani Didar. His Nurani Didar. Because you made a room in your heart. Right now, dunya, the greed and the world and everything about this physical world, we have so much in our heart, we have no room for Imam or Imam's thought or Imam's Didar. Remove the greed of the world, so may Imam come into your heart. See. The question is asking, so what happened in the history that the persecution stopped on the Imams? Was it the invasion of the British and French? Well, good thought, but no. The attention we were supposed to pay was, and if you go back about 30 minutes back into this lecture, you will hear a magical word. And what was that? That as soon as our 40th Imam sat on the throne of the Imamat, he declared, he told us why the prosecution has been lifted. And what was that? Ye dore aakhir hai. This is the end of the time. This is the time of Qiyamah. And in the time of Qiyamah, it is the time of the Zahurat, manifestation. The prosecution was lifted. The cloud of the prosecution was lifted because this is the promise of the end of the time, that Imams will manifest. Imam ke Zahurat hoge dore Qiyamah mein. If you go to Surah Baqarah, ayat number 210, you will see that at the time of Qiyamah, Imam will come from behind the cloud with his angels to do the justice. तो इमाम के ऊपर से ये पर्दा हट गया क़यामत की वजह से. जी. Sir, I don't see any questions in the chat room. Excuse me, Zahurat means उसका मतलब क्या? Manifestation. गुजराती में क्या बोलते? ગુજરાતીમાં શું કહેશો આપણે? ઝહુરાત જ કે છે શાયદ કે મોલા સામે આવી જાય પડદાના અંદરથી. अच्छा, ओके. ઝહુરાત જ કે છે. ગુજરાતીમાં ઝહુરાત કહે છે, ઉર્દू में ज़हूरात कहते हैं, and English में manifestation. Thank you so much. Yeah, open himself up. अच्छा, એ જે પડદા ખોલ્યા ને સાહેબ નજરે દીઠા. Yeah, actually ત્યાં પર બીજી કાંઈ વાત થઈ રહી છે. अच्छा, ત્યાં પર નૂરાની દીદારની વાત થઈ રહી છે. अच्छा. આ જે વાત આપણે કરી રહ્યા છે ઝહુરાતની,
કે જી દુનિયાના અંદર ઇમામ ઝાહિર છે ને ખુલી જશે, બધાને ખબર પડી જશે કે ઇમામ કોણ છે. ઓ સુભાન અલ્લાહ, આમીન આમીન. આમીન આમીન. થેન્ક થેન્ક યુ. યુ. Any other question, Kamre Sahib, or should we stop here? Ya Ali Madad, Mishnah Sahib. Ya Ali Madad. Nowadays we don't go to Jamaat Khana anymore, but we say dua at home. So we get same dua at home. Of course. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Sir, can I ask something, sir? Ji. Sir, if we sit at home, but what happens when we say dua with our other friends on the circle? I'm not saying Jamaat Khana, I'm saying friend circle. Is there any difference? Nope. There's no different. And matter of fact, I have a Farman which we will look at it tomorrow morning session, in which Imam says it is not possible for my Jamaat to come to Jamaat Khana every day. Then, in that case, remember your dua, remember your tasbih. So That we more do the merrier. regularly. Yes, do it regularly. More the merrier. So if you have a choice of reciting your dua by yourself compared to your family, recite with your family. If you have an opportunity to recite with your larger circle of friends, then do that. And then on top of that, if you have opportunity to go to Jamaat Khana and recite your dua with the entire Jamaat, then do that. So you see there are different steps. Yes. By yourself, with your family, with your friends, or with your Jamaat. But do it. That is important. Do it. Okay. Thank you, sir. Thank you, because it's very confusing, you see, because we get happiness when we say dua with our friend circle. I mean, we should. I know we don't have Mukhi Kamriyas there. I know we don't get Khanawadan, but at least we are satisfied that we are saying our dua with congregations, you see, and we have been criticized. So I just wanted to have it clear with you. Thank you for your explanation, sir. You're welcome. And remember Shirazba, Imam is always with you. Imam is always with you. Imam is always with you. Amen. That's true. Yes, sir. Very true. Mola bless you, sir, for all the explanation. Amin. Shukr Mola. Any other question? Thank you, everybody. Ji Kamre Sahib. There's one in the chat. Friends asking, we were in the form of Zuriyat particles and asked Mola to take this Tapanti day. What about other creatures like animal? Were they part of particles, Zuriyat? Okay, so the question is a little bit different here. So nothing to do with this Farman or what we are reading today. Zarat ki baat ho rahi hai, particles. So sabse pehle, I don't know if my friend can understand Urdu, because the word Zarat, the particle, must be understood before we ask this question or before we understand the answer to this question. Zarat, the particle, kya hai? What is it? If you understand that first, then this question would be valid, and this question, the answer could be understood. The soul has 4 stages, and this is not stages we have never discussed before. We have talked about the stages within the human body: the mineral soul, the vegetative soul, the animal soul, and the rational soul. But I'm talking about even before then. मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूं, हमने बात नहीं की है पहले. हम आज रूह की वो 4 अक़साम को सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, जो कंसीवमेंट से पहले आती है. यानी कि माँ के पेट के अंदर आने से पहले की मैं बात कर रहा हूं आपको आज. रूह के 4 स्टेजेस हैं. कब? उससे पहले, हमारे माँ के पेट में आने से पहले. उर्दू और इंग्लिश में दोनों में कहूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए.
पहला स्टेज जो है वो मुंजमीद फ्रोजन पार्टिकल्स, सेकेंड स्टेज जो है वो पार्टिकल है अंथो पार्टिकल, थर्ड स्टेज जो है वो रूह सोल, फोर्थ स्टेज जो है वो स्पर्म मां के पेट के अंदर लाइव हो जाना। ये 4 स्टेज इसके अंदर होता है। अब आ जाएं आपके क्वेश्चन के ऊपर। जब हम फ्रोजन पार्टिकल्स के अंदर थे तो वहां पर तमाम क्रिएशन, दैट इज आंसर टू योर क्वेश्चन, ऑन द फ्रोजन पार्टिकल all the creation was in one single particle, frozen particle, nafsul wahida, in the amr of the imam. I hope you understood the symbol in this. So your question is not how but when, not how but when. At that level, the entire creation was in one single soul, collectively in one soul, in the Amare Ilahi. At that time, yes. But as it got unthought, then as we become in the soul, human soul or rational soul, we went apart. So you can see that we are, even though we have mineral soul, but we are still human. Even though we have a vegetative soul, we are human. Even though we have animal soul, we are human. आपने देखा कि किस तरह से हम अलग-अलग होते 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 हम एक मुकम्मल इंसान की शक्ल में आ गए। जी Okay, so I don't see any questions in the chat. So we should stop here. Thank you, everybody. May Mola be with you. May Mola bless you. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Amin. Ya Ali Madad. Yali We'll see you Madad. soon. Ya Ya Ali Ali Madad. Madad. Thank you so much. Ya Ali Thank you. Madad. Ya Ali Madad. Maulana. Ya Ali Madad. Yali Thank you, Madad. Salim Mola Bhai. की Thank you, खिदमत Salim Bhai. कबूल करे। Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Thank you, Madad. Yali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Yali Madad, thank you. Ya Ali Allah Madad. Hafiz. Allah थैंक यू Hafiz. सर, थैंक यू। मौला आपके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। आमीन। Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, बहुत अच्छा लगता है। Ya Ali Madad. शुक्र मौला, शुक्र मौला, शुक्र मौला। सर जी मैं ऐसा तो कह सकता हूँ अली हाफिज। Whatever you like to say is okay. Thank you, sir. Thank you. Ya Ali Madad. Bye. Ya Ali Madad. Sir, what are the components of ibadat?